Topic we are going to discuss about is solids, and the subtopic is ionic solids. What are ionic solids? Crystalline solids in which the particles forming the crystal are positively and negatively charged ions. The constituent particles are held together by ionic bonds. Examples are NaCl and KCl. Let's discuss its properties. Cations and anions are arranged in well-defined geometrical pattern. They are very stable compounds. क्योंकि ionic bond बहुत strong होती है, इसलिए हमें high energy चाहिए होती है to break those bonds. That's why they are hard, have low volatility, and they have high melting and boiling points. They don't exist as individual independent neutral molecules like N2O2. हमेशा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, KCl का क्रिस्टल होगा. Next, ionic solids are non-directional compounds क्योंकि ionic bonds direction नहीं होती. Structures depends upon the radius ratio of cations and anions. Like NaCl और CSF में जो radius ratios हैं वो same हैं. That's why they exist in the same crystalline form. In case of ionic solids, we talk about the formula mass. क्योंकि they have formula units. They can conduct electricity जब वो molten state में होते हैं. Solid state में वो conduct नहीं करते. दे आर हारी बिटर क्योंकि आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो लेयर्स आपस में स्लिप करती हैं जब भी आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से दे आर हाईली बिटर. नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स यूजुअली हैव हाई डेंसिटीज क्योंकि दे आर हार्ड. दे गिव आयनिक रिएक्शंस इन पोलर सॉल्वेंट्स, और पोलर सॉल्वेंट्स में जो रिएक्शंस आयनिक रिएक्शंस हैं दे आर वेरी फास्ट. दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं. Let's see a question. The number of chloride ions per unit cell of a simple cubic lattice at the corner is 1, 3, 4 or 6. So corner पे जो है वो सिर्फ एक chloride ion present होता है. So this was all about the properties of ionic solids. I hope you have understood it well, and thank you so much.